topic we are going to discuss about is transition elements. And the subtopic is general characteristics of transition elements. Let's define first what are transition elements. Transition elements may be defined as those elements which have partially filled d or f orbitals in atomic state or in any of their commonly occurring oxidation states. ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो अटोमिक स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उनकी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं उनमें उनके डी और एफ ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड होने चाहिए. They are called so because they are located between the S and P block elements. Transition elements D series S और P block के दरमियान lie करती है and their properties are in transition between the metallic elements of S block and non-metallic elements of P block. यानी कि जो इनकी properties होंगी वो intermediate होंगी between metallic and non-metallic. Here you can see transition metals are located between S block elements and P block elements. Thus, their properties are in transition between the P and S block elements. This table is about the electronic configuration of first D series. Scandium में we have partially filled d orbital. इन सब में जो d orbitals होते हैं वो partially filled होते हैं किसी ना किसी state में. अगर वो atomic state में नहीं होंगे तो वो किसी ना किसी oxidation state में इनके partially filled orbitals होंगे. Here we have a practice MCQ. The location of transition elements is in between, and the options are lanthanides and actinides, S and P block elements, chalcogens and halogens, D and F block elements. And the correct option is S and P block elements. Let's move toward our main topic, that is general characteristics of transition elements. These are binding energies, melting and boiling points, covalent radii and ionic radii, paramagnetism, oxidation state, color, interstitial compounds, and alloy formation. In the next slides, we will see them in detail. So the first property is binding energy. Transition metals are tough, malleable, and ductile. The toughness of these metals indicates strong metallic bonding. This is because apart from s elements of the valence shell, the electrons of underlying half-filled d orbitals also participate in bonding. क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं वो टफ होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जिसकी वजह उनकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है. और मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से स्ट्रॉन्ग है कि उनमें ना सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में, बल्कि जो अंडरलाइंग हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. Let's see the trend in periodic table. When we move from left to right, number of unpaired electrons increases up to groups 5b and 6b. 5b और 6b तक unpaired electrons का जो number है वो increase होता है. After that pairing takes place. जैसे जैसे number बढ़ता जाएगा electrons का वैसे वैसे वो paired होते जाएंगे. Until 2b जो वो सारे के सारे paired हो जाते हैं और उनमें कोई भी unpaired electron नहीं बचता. So binding is stronger up to group 6b क्योंकि वहां तक unpaired electrons होते हैं और वो फिर weak हो जाती है up to 2b क्योंकि वहां पे जो electrons होते हैं वो सारे के सारे paired हो जाते हैं. But here lies an exception in binding energies. In first transition series, the general increase in binding energy ends at vanadium. This is due to changes in metallic structure like manganese. Manganese में जो metallic structure है वो change हो जाता है जिसकी वजह से जो increase है वो सिर्फ vanadium तक रहता है.
In third transition series, the increase in binding energy ends at tungsten when all the 5d electrons contribute to binding. So जो हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वहां तक टंगस्टन तक इंक्रीज करता है, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वहां पे सिर्फ वेनेडियम तक इंक्रीज करता है. क्रोमियम और मैंगनीज में मेटालिक स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो कम हो जाती हैं. इन दिस ग्राफ यू कैन सी जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो वेनेडियम तक इंक्रीज हो रही है, देन फिर क्रोमियम की डिक्रीज हो रही है, और मैंगनीज की सबसे कम है. इट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है. और फिर ये बाद में इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो गए फिर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है और फिर ये फर्दर इंक्रीज करेगी. The next property is melting and boiling points. Transition metals have very high melting and boiling points due to strong binding forces between their atoms. Let's see how it varies in periodic table. Melting point increases up to the middle of the series and then decreases to a minimum level at the end of the series, similar to the binding energies. So जो melting point है वो increase करेगा up to the middle of the series क्योंकि वहाँ तक binding energy increase हो रही थी, and then decreases to a minimum level at the end of the series. This trend in melting points correlates with the strength of binding. So in this diagram you can see this black curve. जो melting point है वो increase कर रहा है up to chromium, then मैंगनीज में वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मैंगनीज की कम थी, एंड देन फिर ये फर्दर इंक्रीज करेगा. लेकिन इस कर्व से जो बाकी की कर्व है ये नीचे है, यानी कि क्रोमियम तक वो इंक्रीज करेगा, वेनेडियम और क्रोमियम तक, देन मैंगनीज में वो बिल्कुल कम हो जाएगी और फिर वो आहिस्ता से इंक्रीज होना शुरू कर देगी, और फिर एंड पे जो हमारे पास कैडमियम है वहां तक वो मजीद डिक्रीज कर जाएगी. सो क्रोमियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर मैंगनीज की कम, और लीस्ट किसकी होगी हमारे पास, कैडमियम की. सो हियर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जो बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफ है वो थोड़ा हायर लेवल पे है, और जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है वो थोड़ा लोअर लेवल पे है, लेकिन जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ये सेम ही फॉलो कर रहे हैं. मैंगनीज का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, एंड देन सबसे लोएस्ट जो होगा वो हमारे पास कैडमियम होगा. Next we have a practice MCQ. Catalyst used for ammonia synthesis is, and the options are iron, chromium, copper and zinc, and the correct option is iron. Another question is, which one is a typical element, typical transition element, and the options are scandium, yttrium, cadmium and cobalt, and the correct option is cobalt. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.